Hello students, welcome to MGM Education. This is a poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S.Eliot. In 20th century, this was a famous poem composed by T.S.Eliot. The original title of the poem was Prufrock Among the Women. Later in 1915, he changed the title to The Love Song of J. Alfred Prufrock. This poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, is a modernistic poem in the form of dramatic monologue, right? Which presents a moment in which the narrator or speaker discusses a topic and in so doing reveals his personal feeling to a listener. And love song stands for a narrative poem. Now, in this video, we are going to focus on the various aspects of the poem Love Song of J. Alfred Prufrock, written by T.S. Eliot. Okay, what are the various aspects? So, to focus on them, number one is it is anti-romantic. Second, anti-love. Third, colloquial language is applied. Fourth, flexibility of versification. And fifth is unusual imaginary. And interestingly, the song is objective by nature. So, one by one, if we focus on the aspects of the poem, we can understand the writing skill or the poetic techniques that the T.S. Eliot has used relating to the theme of the poem. Okay, let us discuss one by one. तो पिलामाने मु टिके ओडिया रे भी कहि दउची देखो ये जो टीएस एलियटंकर पोएम जोटा एटा गोटे नैरेटिव पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क इट इज ए गोटे ओल्ड मैन एंड यंग वुमेन ये प्रूफॉर्क टा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओल्ड मैन who want to express his love towards a young woman but he don't feel that this is right time to go for एमते अछि हेले आर आमे बे वेरियस एस्पेक्ट्स आमे अध्ययन करिया के जाउछे सो ए पोएम रो प्रथम एस्पेक्ट होछि एंटी रोमांटिक माने एगेनिस्ट रोमांटिक पोएट्री दुई रे एंटी लव मींस ये तो सॉन्ग रो टाइटल लव अछि किंतु टिके एंटी लव टाइप रे जाउछि तीन रे आर आ गोटे एस्पेक्ट है कोलोक्वाल लैंग्वेज कौन मोस्टा भितर डिस्क्राइब करी तुमको इमेजिनेटिव तेणुक कोलोक्वाल लैंग्वेज बोली कहबे अच्छा पिला माने तापर 4 नंबर होची एस्पेक्ट तार फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्सिफिकेशन ओके बोले इथे राहिम रिदम में सब किछ मैच होनो तो को लाइन लंबा थिबो को लाइन छोटो थिबो एमती तापर फिफ्थ टा होची अनयूजुअल इमेजरी राइट कौन अनयूजुअल इमेजिनरी आ विषय मध्ये मु तुमको भितर डिस्क्राइब करबी तापरे ऑब्जेक्टिव बोले इम्पर्सनल एटा टिके पोएम टा तार अर्थ ठीक अछि ए सब होछि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क पिला माने हमें जो एस्पेक्ट्स जान देले तांकर लेखनी शैली किमति थिला टीएस एलियट रो अच्छा से 20th सेंचुरी रे किमति लिटरेचर को लीड कले से विषय हमको टिके जणा पड़जो ओके चलो एबे गोटे गोटे इंग्लिश एंड ओडिया उभय भाषा रे मु तुमको एक्सप्लेन कर देबी नंबर 1 so the first point anti romantic see the poet T.S. Eliot here marks a break from the romantic tradition of 19th century right the romantic poetry here the steam of which run at its highest point in the first half of the 19th century became weak or reduced in the end of the period here what happens you know T.S. Eliot did not focus much on urban surrounding or urban civilization of streets of London city rather he moved towards the slum areas right and he focused much on the factory surroundings pollutions of smog or fog you can say and in spite of its swelling crowd and exclusive parties
are represented by him without any fear. He doesn't whitewash the urban surrounding at all here. The restaurant smelling of oil, dust, rotors, cabbages filled with the dust are found in this poem, The Love Song, which makes us clear that he is anti-romantic. Yes, means the romantic age poetries are quite different. They focus on urbanization, and this man went away from that. ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି T.S. Eliotଙ୍କର ଏ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା କାରଣ ବୋଇଲେ ଇଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ୱିକ୍ ହେବାକୁ ଗଲା ଯେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲେ ସହରୀକରଣର ସିନେରୀ ବା ପରିସରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମୋକ୍ ଫଗ୍ ତାପରେ ସ୍ମେଲିଂ ଅଫ୍ ଅଏଲ୍ ଡଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ପଏମ୍ରେ ଅଛି ଏସବୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ହି ଇଜ୍ ଏଗେନିଷ୍ଟ ଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଲଭ୍ କେମିତି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରିରେ ଲଭ୍କୁ ଗ୍ଲୋରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା एंड तांके ओन कैरेक्टर गुडी को लव अफेयर्स रे एंड तांके कैरेक्टर्स रे लव निजे से माने रोल प्ले करथले किंतु टीएस एलियट रो ए लव सॉन्ग रे हम देखिबा एटा नो सेंस ऑफ लव पोएम बोली कुआ जाउची काहेकि ना इठी प्रोफॉर्क इज अनडिसाइडेड अबाउट हिज लेडी एंड ही हैज नो आइडिया ऑफ स्पीकिंग आउट ऑफ हिज माइंड देख लो केमी देची अर्थात ही इज एंटी हीरो बिकॉज ही इज नर्वस टिम्ड एंड कावर्ड हु इमेजिन्स हिमसेल्फ समटाइम्स लाइक ए वर्म माने पुको एंड समटाइम्स लाइक ए स्पाइडर समटाइम्स लाइक ए फिश ए टाइप से निजक प्रेजेंट करथुला तेणु ये रोमांटिक पोएट्री रो लव अफेयर्स टीएस एलियट रो लव सॉन्ग रो लव अफेयर्स पूरा गोइंग एगेनिस्ट अनदर तेणु एटा को एंटी लव बोली कहगला। Now move to third point colloquial language देखो पिलाने ठी रोमांटिक पोएट्री जेतोळे होतला एगुडाको colloquial language बोली थिला माने these poems were quite deliberate suggestive and emotional मात्र टीएस एलियट रो ए जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पोरफ्रॉक रे आमे एगुडाको सब टिके डिफरेंटली देखिबा the words are bodily taken from everyday conversation right देखो the first lines रे देखी let us go and then you and I shows how the poet stick to reality in the matter of diction romantic जाको diction but ये सेमती नहीं एटा prosic words are found in a great abundance माने sufficient manner रे सेमती का आउट एग्जांपल देखो half deserted street बोली से यूज करछि chimneys coffee spoons smoked cigarettes ये सब जाक दर्शाऊँची जे इट इज एगेनिस्ट दी रोमांटिक पोएट्री से समय रो आबा वर्ड्सवर्थ मध्ये ये सब ऊपर एम्फसाइज करथिला किंतु टीएस एलियट ए सब जाक ऊपर कोन करछि बैन करके निजर डे टू डे कन्वर्सेशन रो लैंग्वेज को अप्लाई करछि राइट देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्सिफिकेशन ए राइटिंग रे देखो ट्रेडिशनल वर्स माने दुई लाइनिया पोएम गुडा सब राहिम्स जेमिति थिला टीएस एलियट आइरे राहिम ऊपर किछि ट्रेस देनी आपर स्टाइल मध्ये चेंज कर दैछि नै कि आमे देखिबा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक तार जो स्टैंजास अछि इज डिफरेंट लेंथ एंड राइम स्कीम मध्ये तार डिफरेंट नॉट रेगुलर सम लाइन्स आर स्मॉल शॉर्ट माने छोटा लाको सम अदर लाइन्स आर क्वाइट लॉन्गर एंड राइम बिल्कुल ताई सहित मैच भी करूना तेणुक एटा को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्सिफिकेशन बोलकरी कहबे। नेक्स्ट पॉइंट चलो देखिबा फिफ्थ एस्पेक्ट द अनयूजुअल इमेजरी अच्छा इटी रोमांटिक पोएट्स यूज्ड कन्वेंशनल इमेजेस एंड सिंबल्स लार्जली ऑन नेचर प्रकृति ऊपर बेस करे किंतु टीएस एलियट रो इमेजेस that so comes from the immediate scene and from the dirty environment of the street and slums right
For example, the evening is compared to a patient who is lying, on the operation table taking anesthesia. फिर ताको sense नथियो. तापरे the city streets are compared to the tedious argument. So ये सब जाको दर्शाउछि जे आर pattern of writing completely different from the romantic poet. तेणु आर imagery पूरा अलगा. Sixth aspect of the poem. Here it is said to be objective, means the love song of T.S.Eliot is objective. किंतु पिलामने romantic poetry गुड़िको subjective थिला, where the poet wrote about their own thought and feelings. But in the love song of Alfred Prufrock is not subjective. It is objective by nature. केमती इटा रिप्रेजेंटेटिव होची टीएस एलियट रो रिप्रेजेंटेटिव होची प्रोफॉर्क जे कि मेन ए पोएम रो राइट ताको से हीरो वाला प्रेजेंट करछि एलियट हीरो ही निठी द पोएट इज ओनली डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस इन द माइंड्स ऑफ द प्रोफॉर्क वाला ता माइंड रे कोन चलछि ये रिप्रेजेंट करछि सिमिलरली एलियट राइट्स अबाउट द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ आउ दे जनकर कथा देखो जीरो नोशन एंड स्वेनेरी आंको माइंड रे भी कोन चलछि ता टीएस एलियट एक्सप्रेस करचंती तेनु ये रिप्रेजेंटेटिव थॉट बा फीलिंग्स को इठी स्थान दिया जाइछि. ओके स्टूडेंट्स, एबे हम देखिले ये सब जाक होछि एस्पेक्ट्स ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क. Okay students, thank you very much watching this video, and please like and subscribe and connect with this channel MGM for your education. Next I will be going through all the lessons of 20th century English literature. You will be getting one by one videos, and on this lesson only next line wise explanation I am going to release very soon. Please join the channel and subscribe it. Thank you very much.